So we'll be revising the syllabus. Will start from the 10th point of syllabus, creating database continued. So make sure when I revise, you know everything. If you have a doubt, talk to me. Using queries to create new tables, append records in tables, delete records in tables, and update data in tables. Yes or no? Do you know it? Do you know it? Sakshi, do you know this part? No, you don't know this part. Ahmed, do you know this part? No, you don't know this part. I can bet on you. No one in the class knows this part. I can bet on you because I have not discussed this with you. अभी देखना realize. You realize कि कितना extensive है syllabus. I have discussed points apart from this as well, and I will discuss this as well. Okay, so what they're trying to say over here is this, and these points can come. They have not come in the past papers till now. Definitely do the past papers. मैं आपको बार बार कहूँगा, मगर don't count on the past papers for the exam. मैं आपको बार बार कह रहा हूँ. ये नहीं कि अपने 5 साल के past papers का अपनी तैयारी होगी. ये मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं है, कंप्यूटर साइंस नहीं है. CS में you do 5 years past paper. Technically, you are not allowed to come in because 8 to 5 was the time. Uh, bring your students in the front. Okay, so I will do something is I will simply, okay, no, just fine. I'll make a query. Let's say I have the event name. I'll use is result. Yeah, athlete is fine. Okay. So what I'll do over here is I will go to create and I'll create a query and I'll add the athlete table over here. This point can come in any way. There is an activity on Saem.com related to this. Now, this activity है 22 points उसमें मेजरली दो वो points हैं जो आंसर कभी नहीं आए इसी के बाद. It took me a lot of time to make all this. Okay. So what are we talking about? If obviously I run this, I get this. Obviously, आपको पता है इस बात का. Over here, when they are referring to this point, create new tables. Create new tables. Using queries, create new tables. Get the point? It's not create new tables. With the help of queries, make a new table. What they mean is, for example, what I can do over here is, I will say is, let's say मेरे पास यहाँ है is JPN. Maybe it's for uh, Japan. Control C करता हूँ और nationality में मैं लिख देता हूँ is JPN. I will click on make table. I will say is table name, make it JPN. And current database में yes. Do I have a table by the name of JPN over here? I do not. If I say okay, and if I run this, it will say you're about to paste 11 rows into a new table. Do you want to do so? Oh, yes, I want to do so. Once I do so, you see I get a new table by the name of JPN. Or is JPN में I get all the data in that table. Now this could be used in any way. Maybe the concept of transaction file, master file could be targeted. Where the examiner gives you the master file and says you have to separate the transaction file and then make a relationship, give an evidence of this, so on and so forth. बात समझ रहे हो? Okay, so you can actually create tables from queries. This is what the point is. Please read the syllabus very thoroughly. कोई ambiguity मुझसे पूछने से इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए. आपको पूछना चाहिए मुझसे. Go thoroughly through the syllabus. Go through my lectures. Okay, or go through the book. फिर जाके हम थोड़ी तसल्ली होगी. Past पेपर तो लाजमी करने हैं यार. Past पेपर just a practice. It does not determine your uh, how well prepared you are. Yes, in American. Okay. Then we have append. So using queries, append. Now, what do we mean? So before I discuss append, I will discuss delete and I will discuss update. May append last. Now, what do we mean by this is, for example, if I simply come over here, query design में, I will do is, मैं JPN को remove कर देता हूँ. Let's say I have over here now is या ओहो select पे जाता हूँ and let's say I have over here is KOR. So Koreans. Let's delete Koreans. Okay. So you come to delete and it says the criteria that you want to delete is this.
Now, if I run this, it will obviously says you're about to delete 7 rows. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इससे ये होता है कि आपका ओरिजिनल डेटाबेस में टेबल होता है ना, things are deleted from there. So if such a kind of question comes in, please take a backup of your database. Always do that. After importing, making relationship, इसलिए हमेशा read all the question, take 5 minutes, take 7 minutes. पहले question सारा पढ़ो, फिर start करो. Okay? It will make you more prepared. Try this, it will help you out a lot. कई दफा even Excel में भी point बाद में आते हैं, हम realize करते हैं, oh my god, ये पहले हमने okay? So if I do this, yes. So what's happened over here is if I open up my athlete table, okay, you will see is that the Korean KOR has been deleted. You are not allowed to come in, but get the point. Okay, fine, come in, come in. Sit down. Get the point? Delete हो गए, मगर ओरिजिनल टेबल में से डिलीट हो गए। बात समझ आई है? Ali, get the point, right? Okay. Then what we have is if we come over here, let's simply come back. So अब tricky questions पे आ सकता है. Let's talk about more. Select. अब हम बात करते हैं. Obviously, the next option that we have, delete discuss कर लिया हमने. Update. Update is very interesting. और update मेरे ख्याल से अपडेट और अपेंड के आने के चांस ज्यादा हो सकते हैं। अपडेट का मतलब ये है कि इफ आई हैव ओवर हियर इज JPN, ठीक है, जो हमने दूसरे टेबल में कॉपी किया था। What I'll do is I'll go to design view and I will say over here is update. I will say is update the criteria JPN to is Japan. So once I run this, it will say you're about to update JPN to Japan. Do you want to continue? 5 minutes is equal to 17 minutes. Mufaza, that was what the rule was. मंडे से मैं लॉक कर दूंगा सिंपल। वो लैब ओपन होगी, वो लैब का लॉक होता है। We have to be strict in the last 1 month. Okay, please. I have to. Yes करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे and you will see is we have updated. पैसे अगर आपका प्रोसेस में आता हो and you have 1000 records, आप अपडेट कितना करोगे? टाइम वेस्ट करोगे। If you know all these procedures, you save a lot of time. Okay. Now let's talk about is the other thing. So let's say I have over here is JPN का टेबल। तो इसमें मैं काम करता हूँ कि JPN को I will make it JP NNN. Somehow I'll make some changes. For a reason मैं कर रहा हूँ. Okay. I'll come back here. तो आपको समझ आ गई इसमें से तीनों चीज़ों की. Somehow you know is okay, what is meant by delete, what is meant by update, and what is meant by make a table. Am I right? Any problem? You know the procedure. अब आपको idea है कि I can actually work with tables. What is meant by append? I'm sure most of you know it. वही बात होगी कि master file is combined with a transaction file. Let's say my JPN is a transaction file and my athlete table is my master file, and I want to make a new master file. So what I can do is I can simply click on append and it will say is what do you want to append. I want to append is table name, open मेरा कौन सा इस वक्त athlete with let's say JPN. Okay, so if I run this, it says your uh, wait, let me do it again. So I want to append, this is my JPN current database में कर लेते हैं जी। Okay, yes कर देते हैं। If I open up the you see over here is कि जो मेरा athlete का table था that has been appended with this JPN. We have combined both of them. मगर उसने order में combine किया और पेश नहीं किया। So this is what was meant by the first point. Yes or no? Is it clear? Did not come at all for the past 15 years. इस साल आ सकता है, बिल्कुल आ सकते हैं।
be ready for it. Okay, but now since you have an idea, maybe if it does come, you'll know better course. Or you have my activities, उससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी. Okay, summarize data using crosstab queries. So summarize का मतलब basically क्या है? Do you see the time? Frankly, the rule should be I should not allow you in. Seriously. Monday से also will lock it, okay? Right? Ahmed, Ali, I lock it. Okay. So, what is summarizing? Summarizing होता क्या है? Summarizing की different forms हैं. What are different forms of summarizing? Who is this speaker? Zara, now this would be gender discrimination if I. Well, it won't be. It's quite the same actually. Okay. Yes. Yeah. Anyway, he didn't get it actually. So summarizing की दो forms हैं. गौर से सुन लो. अब समराइजिंग के ऊपर भी आ सकता है क्वेश्चन. मे बी एग्जामिनर आपको कहे कि यू आर सपोज टू क्रिएट अ समरी रिपोर्ट एंड काउंट द नंबर ऑफ जेंडर 2013 14 16 थ्री पेपर्स डेटाबेस नहीं है आपके पास. Gentlemen, can you fetch a sheet from there and give a receipt? That's what gentlemen do. Right. So summarize the point. पहले आया हुआ है, cross tab पहले आया हुआ है. You can do the very past papers to practice this. Okay. तो मैं आपको recommend करूंगा कि आप 2022 20 से लेकर 25 तक का करो करो. मगर आप back पे जाओ. I think so. Yes, we did Excel and databases in the past as well. ठीक है. कह दिया आपने इसको. ठीक है. ओके. अब हम करेंगे क्या? मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं. मैं चाह रहा हूं कि जो जेंडर है उसको मैं काउंट करूं एंड जो जेंडर लाइक जेंडर लिखा फीमेल इतने हैं, मेल इतने हैं. So it's just like sum if. How do you do that? You know? आता होगा तो मैं इतना मुश्किल भी नहीं है. सुनो. So what I'll do is ये है आपका एथलीट का टेबल. मैं शुरू से बनाता हूँ. So I'll come into create. I'll come into create design और इसमें मैं ऐड करता हूँ athlete. And what I'll add over here is the gender. And do you see this total over here? This total is used to summarize. I'll click on total and I'll add the gender twice. I'll say group by and I'll say over here is count. So gender add किया दो बार, total पे click किया. So the total in the design view is used to either count while grouping, calculate the minimum, the maximum, the average, the sum by grouping the data. बड़ा अच्छा तरीका है. इससे क्या होगा now if I do that, if I run this, I get to know how many male and female are there. ये तो बहुत कम records है ना. हो सकता है मेरे पास cars हों, उनके मैंने count करना how many cars are there, whatever. So that's how you can summarize. A very easy way. इसके बाद, if you have more data, maybe you have to. Can I discuss this more extensively? कुछ नहीं होता. ये lecture हमारे extensive जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. I don't want to miss out any point. अच्छा, एक काम करते हैं. मैं इसको करता हूँ कि year और gender दोनों को try करते हैं. I'll just tell you what I'm trying to say. मैं आता हूँ क्यूरी डिजाइन में, मैं इसमें ऐड करता हूँ और इसमें मैं ऐड करता हूँ yes. Zara, beta, idhar hi baith. Come here, sit over here. You can't take it over there. So I'll add over here is the gender. ठीक है. Gender and I'll add is the year of birth. इसको करते हैं group and we can do is count this. ठीक है. And we can sum this. So do you see what's happening? It's counting this and it's summing this up. Get the point? So sum if exactly the example of sum if, right? Okay. और इसमें
हम ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यू नो हाउ टू एक्सपोर्ट दिस इनटू एक्सेल एंड मेक अ ग्राफ. ओके फाइन, वो हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी कम टुवर्ड्स एक्सेल. आई विल कम बैक, वो काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा. क्रॉस टैब इज जस्ट लाइक क्रॉस टैब पिवट टेबल इज जस्ट लाइक इंडेक्स एंड मैच. क्रॉस टैब के क्वेश्चन आए हो काफी आए हैं पास में भी. So make sure again cross tab ये अच्छा जरूर करो for P2. Databases के साथ आपको cross tab लाजमी आ सकता है. What does cross tab do? For example, if I want to make is a report that will have very good. Okay. आज पहली दफा लाइट गई है और आज तो CIA लाइट जा रही है. Well done. यार आज CI एग्जाम और आज ही लाइट जा रही है. थैंक यू. ये क्या बात है? थैंक यू यार. जीते रहो. Zara beta, you comfortable over there? Can you see from there? You can come in the front. Sit over here. बेटा ऑन हुआ है उसका, लाइट ऑन है या नहीं? ऑन है. अब ब्लिंक कर रहे हैं. मुझसे it needs to wait for just 1 minute. Okay बेटा. Okay, 3 to 1. Ahmed, can I continue? Okay, so what we're discussing over here is that what are crosstab and how to actually summarize your data again using crosstab. Okay, as if you know this really well. So what we'll do is we will use over here is let's say I will use category, I will use year band, and I will use is the LF peer ratio. What I'm saying is I want the year band to come in the rows. I want the category to come in the columns, and I would like them to basically intersect and give me the LF जो भी है ratio का sum या average या count. So just like the way you use index and match or pivot tables. Get the point? So how can we summarize our data where we have our fields row wise and column wise, and दरमियान में we have some data intersecting in between, which could be numeric, obviously. For this, what we do is we come into query wizard. I'm using over here is the race table. So simple query wizard. I'm sorry. Uh, Query wizard, cross tab, and it will ask me which table are you using. I'm using the race table. It will ask me which values do you want to be in the row. मैंने भी decide किया था कि we can have the year band in the row. We can have the category in the column. We could use is the LPF ratio, and we could count the LPF ratio, calculate the average or calculate the maximum, the minimum, whatever. Let's do the count. Next year, and we finish. You can see is I have one field appearing this way. I have the other fields appearing at the top, and दरमियान में I'm counting these. Okay, थोड़ा data है, ज़्यादा data भी आ सकते हैं, but the point is how do you compare
rows and column fields. This is how you use the cross tab. ठीक है? So we have discussed the cross tab as well. Is this fine? Slow and steady, advanced points. Using text. अच्छा इसमें ग्रुपिंग की जब बात आएगी तब मैं डिस्कस ग्रुपिंग है इसमें नहीं है. लेट मी डिस्कस दिस अभी कर लो. Sorting grouping से पहले. Let's say I'm pretty sure all of you do know how to. For example, this is my query. इसकी मैं रिपोर्ट बनाता हूँ. Assume कर रहा हूँ. And if I have to group this report by the category, I'll simply right click. I'll go on group on category. Further, if I want to group on is something else, let's say I want to group on is the year, I can group on the year. So I can group create multiple groups. आप लोगों को सारों को पता होगा इस बात, मगर चलो आप पता चल गया. ग्रुपिंग इज वेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे आई डोंट समहाउ लग रहा है इस डेटाबेस से आना है, और मुझे समहाउ लग रहा है कि मे बी एक्सेल डेटाबेस दोनों भी आ सकते हैं जफा. आई डोंट नो, जस्ट यू माइट गेट 30 मार्क्स डेटाबेस, 30 मार्क्स एक्सेल. Okay, so we don't have an idea. Okay, अभी आपको आइडिया होगा जो मैथ्स का पेपर दोबारा हुआ है ए लेवल्स का अक्टूबर नवंबर में. इट वाज प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड, प्रीटी आपको आइडिया होगा. आपको ये रिपेयर अगर स्टूडेंट से पूछना, आई डोंट नो वो इतना चैलेंजिंग क्यों कर रहे हैं. नॉट स्केयरिंग यू. सो सेम केस आईटी का अगर पेपर कॉम्प्लिकेटेड आता है, बी रेडी फॉर इट. आसान आएगा तो यू विल हैव अ नाइस डे. कॉम्प्लिकेटेड आएगा तो वी शुड बी रेडी फॉर इट. ओके, डू द पास्ट पेपर. में फिफ्थ टाइम कह रहा हूँ, करो पास्ट पेपर. डोंट डिपेंड ऑन दैट. पेपर पैटर्न डिफरेंट आने इस दफा. मेरी बात लिख लेना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. सो ग्रुपिंग हो गई आपकी. ग्रुपिंग का पेपर बहुत अच्छा हुआ है नवंबर 2014. इसमें काफी अच्छी ग्रुपिंग हुई हुई है. सो इफ यू वांट टू प्रैक्टिस ग्रुपिंग, 14 का पेपर है, नवंबर 16 का पेपर है. दे ask you to do really complex grouping. Yes, कोई मसला नहीं है. All we did was, अभी तो ये तो यार I was assuming कि आपको आता है, मैं तो और टफ पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ. We'll simply create a report. While I am in the layout view, you can group this report by anything. I want to group this by the category. Then I would like to group this on second grouping में इसकी बनाऊंगा, yeah, let's say the year. Okay, so on and so आप groups बना सकते हो. आप इसको ऊपर भी रख सकते हो. So यूं ग्रुप हो, ये ग्रुप्स बन गए. Get the point? Then another group. But what I wanted to discuss was, okay, what if you have to group with our CSR? No. Okay. First name. Randomly को कहता है कि create a report that will group by question भी आया हुआ है. Okay. You are supposed to group by the first initial. Second, what are you doing? Can you explain what are you doing? Let's see how you do this center. And I'm going to record it, and I'm strictly going to tell them if this is what's happening. It's being recorded, and Taki is using phone. I'll share this video with them. इतने और कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, उसको आता है, he is good at things, but he asked me to repeat it again, a simple point. मगर you being more confident. Fine. Very very shameful था कि किस बात पे और कॉन्फिडेंट हो जाए. You realize my points when the result comes in. Okay, you've been sitting with the wrong people maybe. Okay, so maybe you have to group by first initial, first two initial, first three initial. सारे जिनके नाम ए से स्टार्ट हो इनको ग्रुप कर दो, बी से स्टार्ट हो इनको ग्रुप कर दो, सी से स्टार्ट हो ग्रुप कर दो. कैसे करो? डू यू नो? वाओ, 20 मार्क क्वेश्चन आया था. आया हुआ है, बल्कि आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है. आपने इतने पेपर्स नहीं किए, आपको आइडिया हो. मैं रिपीटली कही जा रहा हूँ पेपर्स कंप्लीट करो. नो, सिर्फ 3-4 बच्चे काफी नहीं होते. ओके, नाउ लिसन हाउ विल यू डू इट. वेरी इजी प्रोसेस, मगर जब आता नहीं होगा तो टाइम वेस्ट होगा. सो यू कम टू क्रिएट, you will simply come into your report wizard. I will select from here is what? The race table. Fine, I'll add all the fields. I want to group by over here is the first name. So मैं first name को कर दूंगा. Here I have the grouping options.
Over here I can group by the first initial, two initials, three initials, whatever. Let's just do it first initial. Okay किया? And then we can make it ascending, descending, whatever you may want to do. वो अलग की बात है, मगर A का ग्रुप लैदा बन गया, B का लैदा बन गया, सारों के obviously you will have different groups made for every alphabet starting. Very easy point, just remember. आपका ही काम है कि आप याद रखो चीजें. Okay, so let's continue. Using text, numeric, date, time, wildcard, boolean operator. Obviously, this is something that you do know. I believe yes. Okay. Wildcards का आपको पता है. Extensively, question mark और star कहाँ use होता है. Okay, ये तो basic चीज है. इसमें अगर आपने blunder कर दिया, it will be a mess. Okay, so you do know when you make a query that what is the difference between, for example, if I make a query design. uh, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ मैं you do know why we use this or. When we write in straight line, it means an and. When we write diagonal, it means an or. Yes or no? मैं दोबारा रिफर कर रहा हूँ आपको नवंबर 2014 के पेपर में डाटा बेस का क्वेश्चन है, उसमें पॉइंट यूज हुआ है. हाल तो मुझे नहीं बताना चाहिए क्योंकि दिस वाज 18 मार्क्स क्वेश्चन वेयर दे प्लेड विद द वर्ड्स और उसमें और यूज करना था और एंड. सो एक एंड यूज करना था और एक और. अगर आप नहीं करते आपका सारा रिजल्ट खराब आता है, 20 पेज में रिपोर्ट आती है, ऑल मैस. ओके, सो you have to understand what the question is. The essence is understand, फिर अप्लाई करो. ओके, ये सारा किया होगा प्रैक्टिस तो मुश्किल नहीं होगी. मैं आई विल कम बैक टू दिस ऑन मंडे क्योंकि जब हम बेसिक रिवीजन करेंगे उसमें दोबारा हम करेंगे. तो आई नो वरीज, आई विल कम बैक टू दिस अगेन. अच्छा, performing calculations with the arithmetic operations and numeric and logical functions including calculated control fields and calculated fields. दोनों चीजें हैं. अब calculated fields क्या होते हैं? You will come up with so many points with me today जो आपने पहले डिस्कस ही नहीं किए होंगे. You do know that we can make calculated fields in query. You can make a new field, combine the first name with the last name, add 10% of the commission to the commission, deduct 10% of the commission from the commission. Yes or no? पता है ना? पता है ना? बेसिक है. मगर अगर ये पॉइंट आपका आता है कि टेबल में you have to make a new field. For example, वो कहते हैं कि create a new field in the table that combines the last name with the first name. Query में नहीं, table में. How would you do it? You got my question? So, इसके डिजाइन व्यू में आप क्या करोगे? इसके क्या यहाँ किसका करोगे? You make a new field? Okay, fine. I'll name this as full underscore, sorry, full underscore name. And then, yes, well done. You're close. Calculated. Come to calculated. And over here, what I will do is I will use is equals to, no, just have over here the first name, concatenate. So मेरा concatenate ना ये है. It's a different keyboard. And the first name and the last name. So you see over here is, obviously I can add a space as well. ये टेबल है, क्यूरी नहीं है. Please get the essence. हम टेबल में काम कर रहे हैं. Okay, so there might be a calculation you have to do initially in the table as well. इसको कहते हैं calculated field within a table या क्यूरी. तो ये बात टेक्निकली बात हो रही है. Perform arithmetic operation numeric function including calculated controls and calculated fields. Okay, so make sure आपको दोनों पता हो. You have it within a table or in a query, बस idea हो जाएगा. But it can be done both ways. Get my point? Yes. आप इधर आए calculated में. Okay, so you select from here. आपको ठहरो. जी मैं कह रहा था कि you add over here is another field. Okay, let me just delete it. So I have his full name.
और फुल नेम में आई विल सेलेक्ट ओवर हियर इज कैलकुलेटेड, और कैलकुलेटेड क्या करे, आपके फर्स्ट नेम should be concatenated, okay, with a space and concatenated with the last name. Okay, इसको जब आप रन करोगे, you get over here is the full name with spaces as well, just like you did before. Yes or no? मैं अभी नहीं, मैं इंशाल्लाह मंडे को इस पॉइंट को और एक्सटेंसिवली डिस्कस करूंगा. We will talk about कि can we apply more functions over here as well. देखो, मैं फायदा ये हो कि सिलेबस हमारा खत्म हो गया, मैं चाह रहा हूँ कि मैं और इसको इन डेप्थ एडवांस डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ. So we will continue with this part on Monday inshallah with bit more advanced functions में डालूंगा इसमें, and we'll see how it works. ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं कराऊंगा, डोंट वरी. ये ना समझना कि पता नहीं क्या कराई जा रहे हैं, बस सिलेबस ओपन है बेटा, मैं उसमें से ही देख के आपको पॉइंट्स कर रहा हूँ. आप अज्यूम कर रहे थे कि आपको आता है, मगर एक्चुअली आपको नहीं आता. You get my point? This is why the instructor is supposed to go through everything and teach the students. Okay. Anyway, sorting, including, okay, fine criteria. अच्छा, इसमें या अब मेरी बात सुनो. Designing and creating an appropriate data entry form including appropriate font styles. अब मेरी बात सुनो. इन्होंने तो आराम से सिर्फ कह दिया इधर के रेडियो बटन्स, ड्रॉप डाउन मेन्यूज आने चाहिए, आपको फॉन्ट कंट्रोल्स आने चाहिए, लिंक सब फॉर्म आना चाहिए, मगर इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आए वो बड़े एक्सटेंसिव आए हुए हैं. Just by stating कि वो students should know how to use drop down menu is not enough. आपने मार्च 18 का पेपर देखा है, आपने मार्च 21 का पेपर देखा है, ठीक है, आपने स्पेसिमेन 17 का P4 देखा है, 40 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं. Specimen on 17, 40 marks of this only, which can come this time. हो सकता है 40 मार्क्स का आ जाए सिर्फ एक एडवांस फॉर्म बनाने. मैंने किसी ने आप सॉल्व करना है ड्यूरिंग दिस 4 क्लासेस 4 to 5 स्पेसिमेन ऑन 17 मैंने रोका हुआ है कि मैं कहते एक बार रिवीजन करके साथ साथ डिस्कस कर लेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, और इस पेपर से आपकी पूरी रिवीजन हो जाती है. स्पेसिमेन पेपर था, उस तरह कभी दोबारा नहीं आया, मगर आ सकता है. इसी न्यू सिलेबस का ही है. Okay, so let me just come back over here. इधर अब हम बात कर रहे हैं कि now let me somehow do one more thing. मैं क्यू डिजाइन में आता हूँ. Let me add the race table. So over here, what I have is the following fields. मैं अब query पे दोबारा आ रहा हूँ because I just want to. So obviously you do know how to create a new field to combine both the first name, last name, and let's say if you want to do is you want to create a new email address and extract the first 3 letters of the last name, 3 letters of the first name, and make a new email address. Yes or no? Can you do it? Me using left, right, mid over here. Okay, right. So you see, हम extra use करेंगे इसको. I can say over here is, uh, I can use over here is let's say email. ये question आया हुआ है, मगर Excel में था, if you remember. 2017 के P2 में आया था Excel में, मगर Access में भी आ सकता है. So I will say is email, and बल्कि मैं ऐसा काम करता हूँ. Let me type it in notepad so that it's visible to all of you, और फिर मैं explain कर दूँगा. So मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि I can have is new underscore email, which would do is use the first, so I can use is the left function, और लेफ्ट फंक्शन के अंदर मैंने यूज करना है इधर फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम. स्पेलिंग वही होनी चाहिए, वरना एरर आता है ना, आपको पता ही है. सो फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, कॉमा, 3 characters should be combined with right function, and use over here is the last name, comma 2.
and then combine this with at the rate of, yeah, let me show off. Fine. So let's try this first, then I'll explain. पहले इसको देख तो लेना काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा. कंट्रोल वी किया, रन किया. I get a new email address that takes out the first two characters of the first name, the last three characters of the last name, and makes a new email address. How did we do it? You have to remember this. So that पता ही है, that's how we make a new field. Left का function use किया. That's why I use this bracket. Please, at this stage, आपको पता होना चाहिए. O level basics. For functions, we always use these brackets. For arrays, yeah, for database fields, we always use these brackets. Okay, for our scripting, we always use these brackets. Yes or no? ये rule है. You have to obey this rule in VBA as well. जल्दी से हो. Okay, so you see this is a function. और अगर let's say CI में खुदा ना कोई point भूल जाता है, you'll be wasting your time क्योंकि आपको basic rule था जो मैंने डिस्कस किया होगा मगर आप भूल जाते हो. नहीं नहीं स्क्रिप्टिंग हो गया वो actually I'm just talking about the types of brackets to be used where. Okay, so field referring to a field, get the three characters of this field, concatenate right से इस field के दो characters, concatenate double quotes में ये क्योंकि string है, so string has to be double quotes. So I hope no problem with this. याद रहेगा? Very good. Okay, ठीक है. तो अगर हमने ये डिस्कस कर लिया, we should also know is कि over here we have over here is the race time. यार यहाँ डेट ऑफ बर्थ नहीं हो सकती थी. Okay, we have the race time only. I wanted to discuss that. एक सेकंड दो, I can't ignore it. कोई ना कोई फील्ड होगी जिसमें ना मुझे सिर्फ चाहिए. सॉरी, दोबारा वही ओपन हो गया. यार दोबारा मुझे कुछ डेट की बस फील्ड चाहिए टू एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट. कोई डेट की फील्ड नहीं है. ओए बाय द वे, होल्ड ऑन. या इस पे तो मैं दोबारा मंडे को आना ही है मैंने. लेट मी टॉक अबाउट, इन्होंने बात नहीं इधर की ग्रुप स्विच बोर्ड. या सॉरी, वी विल कम बैक टू दिस. इसके लिए तो पूरा वो जब मैं पेपर सॉल्व करूंगा ना, स्पेसिफिक 17 इंसान की रिवीजन हो जाएगी. ठीक है. ग्रुप रिपोर्ट कंट्रोल, कैलकुलेट कंट्रोल, दिस पार्ट. डिजाइन एंड क्रिएट स्विचबोर्ड मेन्यू विद इन अ डेटाबेस. व्हाट इज दिस? स्विचबोर्ड क्या होता है? वी हैव डिस्कस्ड फॉर्म्स, यस और नो? वी नो हाउ टू मेक अ फॉर्म, वी नो हाउ टू मेक अ सब फॉर्म. मतलब क्या है कि सब फॉर्म का मतलब ये होता है कि मैं अगर मेरे पास लेट्स से कोई भी प्राइमरी टेबल है. अच्छा, जब भी इनेबल कंटेंट आए ना, इसको पहले इनेबल कर दिया करो. Don't work without this. At times, your functions will not work अगर enable ना हुआ, and you'll keep on wasting time. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि if I have this table, okay, and if I directly make a report of this, okay, sorry, a form of this, you will see is कि मेरा सब फॉर्म आ जाता है. सब फॉर्म क्यों आ रहा है? क्योंकि I made a form out of this table which actually is linked to a primary table. जब ये प्राइम टेबल से लिंक हुआ होता है तो ऑब्वियसली फॉर्म जो बनेगा तो बताएगा कि ये वन टू मैनी है. इफ आई गो नेक्स्ट, दिस इज वन टू मैनी. वन इस सेकंड के मैनी ये हैं, इस सेकंड के मैनी ये हैं. वी कॉल दिस इज सब फॉर्म. यस और नो? आपके 2017 में 18 में दो बार सब फॉर्म्स आए हुए हैं P4 में.
ओके 17 का P4 नवंबर था, जून एग्जैक्टली नहीं याद, मगर 18 में सब फॉर्म आया हुआ है। ओके तो ऑब्वियसली दोबारा भी आ सकता है सब फॉर्म, इट्स नॉट समथिंग डिफिकल्ट। ओके तो 17 का P4 जरूर करना, उसमें सब फॉर्म की डिटेल काफी एक्सटेंसिव मांगी है हमने, विच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, ट्राई करना आपको आइडिया हो जाएगा। 25 मार्क्स का क्वेश्चन था, मेक अ फॉर्म, मेक अ सब फॉर्म, मेक बटन्स, कमांड बटन्स, रेडियो बटन्स, ठीक है, जो लेक्चर मैंने ऑटोमेशन के पहले किया हुआ है। ओके सो माय बिफोर आई एंड लास्ट टॉपिक, बेटा सुन लो ओवर हियर, let me just I can't I delete this anyway, we don't have over here is a switchboard। ये जो स्विच बोर्ड है ना मेन्यू, ये फॉर्म नहीं एक्चुअली होता, स्विच बोर्ड एक सेपरेट चीज होती है, एंड यू विल नॉट फाइंड स्विच बोर्ड इधर कहीं भी। अब आप स्विच बोर्ड ढूंढोगे ना, आपको स्विच बोर्ड कहीं नजर नहीं आएगा। हाउ डू वी एक्टिवेट द स्विच बोर्ड? I will simply do is I will come to file, options, customize ribbon, file, option, customize ribbon, yes or no, file, option, customize ribbon। उसके बाद I will do is I'll add a new tab। ठीक हो गया, फाइन। उसके बाद मैं क्या करूंगा, I will simply come to all commands, okay, all commands, और यहां मैं ढूंढूंगा do I have is a switchboard। So let's come to S, if you see let me know। मैं आगे तो निकल गया। हम्म, do you see switchboard, switchboard manager, yes or no? You put this in the new tab जो मैंने बनाया है, इसको करो ओके, you will see is a new tab opens up, a new tab बन गया है जिसमें switchboard manager आ रहा है। This facility was not available, you have to activate it, keep in mind। Now I'll click on switchboard and I will say is let's create a new switchboard। ओके इसका नाम ही रख लेते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, and I will edit this and I will say is new, और क्या करे, it should open report, do I have a report, एक ही report है, चलो एक तो है ना at least, okay किया, okay done, and I can simply close this, close। So if I open up the switchboard, I get this, and if I click on this, it opens up the report। ये एक default switchboard that has been made by Access, and they would want you to make something like this if this point comes in। If you make a form, that will be wrong, because switchboard का मतलब switchboard है, it's designed by Access on their own। Get my point? So remember the point of switchboard, you have to practice। कभी नहीं, आज तक ये point आया ही नहीं, not even once। So पांच पेपर्स करके आप सरप्राइज नहीं हो सकते स्विचबोर्ड कहाँ से आ गया, मैं बता रहा हूँ आपको ना। इंशाल्लाह मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऐसा पॉइंट आए और मैंने ना कराया, आई कैन गारंटी यू। ओके सो राइट, डन फॉर टुडे, I think this is enough for today। We will come back with